So, good morning to all of you. ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଫିଜିକ୍ସର ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫିଜିକ୍ସ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ତୁମର ଭେକ୍ଟର ଆନାଲିସିସ୍ ହେଲା। we will discuss about the vector analysis. Here we will discuss about the scalar and vector quantity कौन product of vector कौन आम प्लस टू रे देखिथिले डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर किंतु हमें ग्रेजुएशन देखिबा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर देखिथिले हमें प्लस टू रे किंतु हमें ग्रेजुएशन फिजिक्स रे देखिबा जे प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर सेमती प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर हमें डिस्कशन करवा आज क्लास रे। ओके, सो व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी कौन? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। Scalar quantity कौन? Now the physical quantity which requires only magnitudes for its complete specification is called scalar quantity. The physical quantity which requires only magnitudes for its complete specification is known as scalar quantity. For example, length, mass, time, temperature एवढा सब होची तुमरा स्केलर क्वांटिटी हला। सिन वेक्टर क्वांटिटी कोन? सिमिलरली द फिजिकल क्वांटिटी which requires both magnitude and direction, for its complete specification, is called vector क्वांटिटी हला। सेमते जो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करिया पे मैग्नीट्यूड मो दरकार आउ डायरेक्शन मो दरकार ताको हम कहबा वेक्टर क्वांटिटी। कोड गई परिबो फॉर एग्जांपल displacement
velocity, huh, acceleration, force, momentum, एटसेट्रा एवढा सब हूँ तुम वेक्टर क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने मैग्नीट्यूड दरकार आउ डायरेक्शन दरकार ताको हम कहवा वेक्टर क्वांटिटी है। सो यहाँ हूँ तुम स्केलर आउ वेक्टर क्वांटिटी। तापर हम देखिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, हम देखिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सो आम देखीचे प्लस टू रे देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। गोटे है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बा ताको डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मधे कह जाउची। आ गोटे है तमरो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बा ताको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ले कह जाउची। सो इट इज टू टाइप्स ऑफ, it is two types of. Number one is dot product or scalar product of two vector. Number two है cross product or vector product of two vector है। there are two types of vector। गोटे है तुम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बा ताको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में कह होची। आ गोटे है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। फर्स्ट नंबर वन लिखिबा हमें डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। फर्स्ट हम लिखिबा नंबर वन है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कौन? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर the dot product of two vector is defined as the product of magnitude of two vector product of magnitude of two vector and cosine of the angle between them and cosine of the angle between them. That is a dot p equal to kata ho magnitude of a to magnitude of b into cos theta. Sindi number 2 asla, sindi number 2 asla cross product or vector product of two vector. Cross product or vector product of
ହେଲା। So cross product कौन ना, it is defined as the product of magnitude of two vector and sine of the smaller angle between them. It is defined as the product of magnitude of two vector product of magnitude of two vector and sine of the angle between them, that is a cross b magnitude of a to magnitude of b into sin theta. এটা হচ্ছে তোমরা ক্রস প্রোডাক্ট। সো আমি প্লস টুরে ଦେଖିଥିଲେ ডট প্রোডক্ট অফ টু ভেক্টর ক্রস প্রোডক্ট অফ টু ভেক্ଟর ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଫିଜିକ୍ସରେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଥ୍ରୀ ଭେକ୍ଟର ଦେଖିବା। ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଥ୍ରୀ ଭେକ୍ଟର, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ଭେକ୍ଟର ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ନା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କେଲାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ ଭେକ୍ଟର, ଭେକ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଥ୍ରୀ ଭେକ୍ଟର। ସେମିତି ଫୋର୍ ଭେକ୍ଟର ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କେଲାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ଭେକ୍ଟର, ଭେକ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ଭେକ୍ଟର। ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଥ୍ରୀ ଭେକ୍ଟରର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟିସ୍ ଅଛି, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୋର୍ ଭେକ୍ଟର କ'ଣ ପ୍ରପର୍ଟିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ସ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଫିଜିକ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। Product of three vectors or scalar triple products. Okay, देखिए हमें प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स कौन बा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कौन, तार कौन सब प्रॉपर्टीज अच्छी, कौन सब न्यूमेरिकल्स अच्छी, हमें डिस्कशन करिया। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कौन, it is given by the scalar product of any vector, the scalar product of any vector with the vector products of remaining two vectors. So scalar triple product कौन ना, it is equal to this product scalar product of any vector with the vector product of remaining two vector. So if A, B and C be three vectors, then
their scalar triple products scalar triple product means scalar product of 3 vector. Scalar triple products can be written as A dot B cross C or यदि A B C 3टा वेक्टर हम ताले समान स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा जीवो A dot B cross C तुम कौन कहला इट इज गिवन बाय द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर इटा गोटे वेक्टर ये गोटे वेक्टर एमान भितर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कौन इट इज डिफाइंड एज इटा होची A और B cross C भितर स्केलर प्रोडक्ट होची डॉट रही देखो A और B cross with a scalar product. So it is equal to the scalar product of any vector with the vector product of remaining two vector. इटा होची तमार scalar triple product. ताकू यार ए ब्रैकेट विथ A B C एमिति मध्ये लिखा जाई परियो scalar triple product. ओके वर्तमान बाहर करिया तार वैल्यू बाहर करिया लेट A equal to आमे नबा A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap B equal to nova B1 I plus B2 J plus B3 K and C equal to nova C1I plus C2J plus C3K. Then A dot B cross C equal केता आसीबो हमरो then A dot B cross C इक्वल केता आसीबो A र वैल्यू पके दियो A1I plus A2J plus A3K dot B cross C पकेबा B बदल रे पकेबा हमें B1I plus B2J plus B3K क्रॉस C बदल के तो पकेबा C1I plus C2J plus C3K बुझला और दिस इज इक्वल केता आछो A1I plus A2J plus A3K dot B cross C equal केता आछे हमरा B cross C equal हम केते पकेछे एटी हम मन नबा B cross C equal केता हबो I cap J cap K cap B ର कंपोनेंट उडा केते B1 B2 B3 C1 C2 C3 है so B cross C equal केते I cap into B2 C3 minus B3 C2 so पके दियोडी वैल्यू उडा B cross C केते this is equal to this is equal to केते आसीबो हमरो B2 C3 minus B3 C2 into I cap plus
j cap into केते b3c1 minus b1c3 plus b3c1 minus j cap plus k cap केते b1c2 minus b2c1 plus b1c2 minus b2c1 into k cap बुझला सो एटा बर्तमान केते एटा को बर्तमान a1i plus a2j plus a3k dot something i cap plus something j cap plus something k cap बर्तमान एटा को a बोली भाबो ई पुरोडा को b बोली भाबो बर्तमान a dot b इक्वल आसला एटा बर्तमान कोन हिला बडा बर्तमान एटा को a बोली भाबिबा ई पुरोडा को b बोली भाबिबा तो केता आसला a1i plus a2j plus a3k dot something i cap plus something j cap plus something k cap सो या को जदी हम डॉट करबा केता हबो a i dot i इक्वल 1 हबो j dot j इक्वल 1 k dot k इक्वल 1 i dot j 0 i dot k 0 सेन j dot i 0 j dot k 0 सेन k dot i 0 k dot j 0 बुझुछि सो दिस इज इक्वल केता हबो i dot i इक्वल 1 सो i इक्वल a1 into this much इक्वल केता आसला एटा आसला a1 into b2c3 minus b3c2 केवल i dot i रहयो j dot j sin रहयो k dot k रहयो आ सब टर्म 0 होइजो क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अनुसार a1 into b2c3 minus b3c2 plus a2 into b3c1 minus b1c3 plus a3 into b1c2 minus b2c1 हला सम केता असला a1 into b2c3 minus b3c2 a1 into b2c3 minus b3c2 i dot equal 1 सिंधी j dot j equal 1 a2 into b3c1 minus b1c3 सिंधी k dot k equal 1 a3 into b1c2 minus b2c1 आउ जत्ते टर्म i dot j 0 हिजो i dot k 0 हिजो j dot i 0 j dot k 0 सिंधी k dot i 0 k dot j 0 ओके सो एटा को मैं इमिति लिखि परबी एटा को हमें डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखि परबा a1 a2 a3 ओके b1 b2 b3 c1 c2 c3 लिखि परबा एटा हमर जहा आसले एटा मत था एटा केते a1 into b2c3 minus b3c2 एटा मत a1 into b2c3 minus b3c2 plus a2 into b3c1 minus b1c3 एटा मत plus a2 into केते b3c1 minus b1c3 एसिन plus a3 into b1c2 minus b2c1 a3 into b1c2 minus b2c1 सो एटा जहा एटा मत हमर ताहा सो हमर केते आसला सो हमर आसला केते एटा सो a dot b cross c हाँ এটা হচ্ছে স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট a dot b cross c ইকুয়াল কত আসবে আমরা আসলা a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ওকে এটা হচ্ছে তোমার scalar triple product that's the scalar triple product my scalar product of 3 vectors that's the scalar product of 3 vectors. Okay. What's the scalar product of 3 vectors?
ହେଲା ସେମିତି ଆମେ a ଡଟ୍ b क्रॉस c ବାହାର କଲେ ସେମିତି b ଡଟ୍ c क्रॉस a ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା c ଡଟ୍ a क्रॉस b ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା ସो ଆମର a ଡଟ୍ b क्रॉस ଯାହା ଆସିବ b ଡଟ୍ c क्रॉस a ମଧ୍ୟ ତାହା ଆସିବ c ଡଟ୍ a क्रॉस b ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଆସିବ ସିମିଲାରଲି ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା similarly b dot c cross a and c dot a cross b have the same value. Have the same value. Have the same value. Therefore, a dot b cross c equal to b dot c cross a equal to c dot a cross b हला तुम a dot b cross c बाहर करियो जहाँ आसियो b dot c cross a मते सेति ही आसियो c dot a cross b मते सेति ही आसियो so कोन लिखिया हमें so the value of the product of vectors the value of the scalar product of three vectors. Okay, so the value of the scalar product of three vectors remain unchanged the value of the scalar triple product of three vectors remains unchanged provided कौन एडो सब साइक्लिक मैनर अच्छे देखो ए बी सी ए सी ए बी सो समान जदि साइक्लिक ऑर्डर रहिबे समान स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू रा किछि चेंज हबो नाही सो द वैल्यू ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स रिमेन्स अनचेंज्ड प्रोवाइडेड these are in cyclic manner. Okay. It was very important question. What is scalar product of three vectors? Next class हम देखिबा तमरो what are the properties of scalar product of three vector और scalar product of three vector रे कौन सो न्यूमेरिकल्स अछि हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिया. ओके.